Hi guys, and welcome back to my channel, and if you guys are new to my channel then welcome. So today I have created this reddish copper sparkly eye makeup for you all. So if you guys are interested in knowing how to achieve this look, then please keep on watching. So to start off, I'm first going to go in with L'Oreal's Infallible Glow Lock Illuminating Primer. I'm really enjoying using this primer. It's really nice, and I hope that they soon launch this primer in India as well. So for foundation, today I will be going in with Fenty Beauty's Pro Filter Soft Matte Longwear Foundation in number 290, and I'm going to mix a little bit of Anastasia's Liquid Glow Face Highlighter in the shade Peach Fizz, and I'm going to apply the foundation with my foundation brush. And then I'm going to take my beauty blender and just going to blend that foundation. For concealer, I'm going to go in with Too Faced Born This Way Multi-Use Sculpting Concealer in the shade Golden Beige, and I'm going to apply this concealer under my eyes and on the highest points of my face. और मैं अपने अंडर आइज को RCMA के ट्रांसलूसेंट पाउडर के साथ सेट करूंगी. I'm going to set the rest of my face with NYX HYDRA Touch powder foundation in the shade Golden. To add a little bit of warmth to my face, I'm going to go in with Physicians Formula Butter Bronzer in the shade Deep Bronzer. अपने ब्लश और हाइलाइटर के लिए आज मैं यूज़ कर रही हूँ मेकअप रेवोल्यूशन का अल्ट्रा ब्लश पैलेट, और ये पैलेट का नाम है हॉट स्पाइस. Now let's begin with eye makeup. तो सबसे पहले मैं Fenty Beauty का Pro Filter Amplifying Eye Primer अप्लाई करूँगी all over my lid. तो अपने आई मेकअप के लिए आज मैं दो आई शैडो पैलेट्स यूज़ करने वाली हूँ. सो फर्स्ट आई एम गोइंग इन विद COLOURPOP's रेंडेवू आई शैडो पैलेट, और उसमें जो शेड है स्टाइल एंड ग्रेस, उसे मैं अपने आउटर कॉर्नर पर अप्लाई कर रही हूँ और फिर अपने क्रीज पर और उसको इनवर्ड्स ब्लेंड करूँगी. और ताकि कोई हार्श लाइन ना रह जाए, इसलिए मैं अपने ब्लेंडिंग ब्रश से एजेस को सॉफन करूँगी. So now I'm going to go in with Shake It Off eyeshadow from that same palette, and I'm going to apply that eyeshadow just on my outer corner or outer V. It's a really nice berry colored eyeshadow. Now I'm just going to extend the outer corner ताकि हमको वो थोड़ा सा lifted look मिले. And for my lid color, I'm going to go in with our secret eyeshadow. It's a really pretty red copper metallic eyeshadow. और आपने जैसे देखा, मैंने अपने ब्रश को वेट किया ताकि हमें मैक्सिमम इंटेंसिटी वो ज़्यादा मेटालिक फिनिश मिल सके. और बस बहुत ही हल्के से अभी मैं उसको ब्लेंड करने वाली हूँ.
और अपने आई मेकअप को थोड़ा और ग्लैमरस बनाने के लिए आई एम गोइंग टू गो इन विद दिस स्टनिंग ट्राई मी आई शेडो फ्रॉम डेजी XKT फ्रेंडकेशन पैलेट, डोज ऑफ कलर्स का आई शेडो पैलेट है, एंड आई एम गोइंग टू अप्लाई दिस आई शेडो ऑन टॉप ऑफ माई कलर पॉप्स आर सीक्रेट आई शेडो। और अपने आईलाइनर के लिए आज मैं यूज़ कर रही हूँ लॉरियल का जेल eyeliner in the shade 05 Sapphire Blue. Now I'm going to take ColourPop's Our Secret eyeshadow and apply it on my lower lash line. And on my waterline also I'm going to apply L'Oreal's gel liner. And on my tear duct I'm going to apply FRIENDCATION का Try Me eyeshadow. और गाइस मैंने अपने ब्रश को वेट किया है, इसलिए जो आई शेडो है काफ़ी मेटालिक लग रहा है। Now I'm going to coat my lashes with L'Oreal's Lash Paradise mascara. और अभी मैं पैक के आई लैशेज़ अप्लाई कर रही हूँ। मुझे इसका नंबर याद नहीं है, ये अपने पैकेट में नहीं था, ऐसे ही मेरे ड्रॉर में पड़ा हुआ था। सो आई एम सो सॉरी गाइज, आई डोंट नो ये कौन से नंबर के आई लैशेज़ है। एंड नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू क्विकली टच अप ऑन माई ब्लश एंड माई हाईलाइटर। And for my lips today, I'm going to go in with my most favorite lip shade and most favorite formula. वो है ColourPop का Blotted Lips in the shade Sleepy Eyes. आप देख ही सकते हैं कि मैंने literally इसे ख़त्म कर दिया. I love this product so much. And now I'm going to set my makeup with Morphe's Continuous Setting Mist, another favorite product of mine. So this tutorial comes to an end guys, and I really hope that you enjoyed this video, and if you did then do not forget to like, comment, share and subscribe to my channel, and also please hit on that notification bell so you guys are notified every single time I upload a new video. And I shall see you guys very soon in my next one. Until next time, keep reviving your own fashion.